चलो मुंशियारी चल। जगह कहाँ से बैठने की? अरे दिल में जगह होनी चाहिए, जगह तो बन जाती है बाकी। दिल में तो बहुत जगह, दिल में तो हजारों लोग बैठ जाते, बाइक में कैसे बैठ पाएंगे? So basically वो एक्चुअली गांव है वो, ठीक है, जो वो लोग अबैंडन कर देते ना वो लोग, दुक्तू करके गांव है। मेरा भी एक हेलमेट ले जाना। हाँ वो लेके आ रहा। Hello everyone, welcome back. So technically this is day 6 of our trip
But since this is a new episode, let's call it day 1. The previous episode, of course, was the journey to Dharma Valley. If you haven't watched that already, please do so. I'm pretty new to YouTube, so I don't really know how to put a link to that video. But if I am able to do it, it will appear somewhere here, 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 or here. Or else you'll have to look for it yourself. So we started very late from Dharchula yesterday. All 3 of us being lazy asses. We started around 2:30 p.m. But the distance between Dharchula and Munsyari is not much. It is about 97 kilometers. And we managed to do it in about 4 hours. And we reached Munsyari at 6:30 p.m. But the route is absolutely scenic and unexplored. It was like proper road less traveled, road less explored. The whole route was along Gori Ganga River, and the whole valley was like I would say a virgin valley, if I can say so. So yes, it is a definite place to visit if you come this side. Must visit, must see thing. Shivraj and his fiancée Pooja have joined us from Pune. Hi guys. Hello. हाँ मराठी माणूस आहे बट दिखता पंजाबी है पूरा. कैसा था जर्नी यहाँ तक का? कैसी रही ठंड? लड़कियां बस गिर रही थी. बोल रही यार कहाँ गया था मेरा राजकुमार, आ गया अभी. नाइस. काफी मजा है. So initially we thought we'll go to Khalia Top today, but then almost everybody who comes to Munsyari goes to Khalia Top, so we thought let's go someplace else. And we thought we'll go to this hot spring, which is about 20 kilometers back down the way which we came yesterday. So let's see, let's check that out. And post that we'll go to an eco park which is there, and Nanda Devi temple. So let's explore Munsyari and the hot spring today. And tomorrow we'll go down to Nokuchiatal. So see you on the road. So the hot spring didn't turn out to be how we thought it would be, like how Kheer Ganga is. So instead we just sat next to the river and chilled for a while. So yeah, you can give this hot spring a miss when you come this side. It's okay. चिल्ड्रन पार्क ही चलते हैं भाई. चलो आ जाओ, पहले ये करते हैं. यार सीढ़ी वाला करते हैं. टायर वाला भी करना है यार, टायर वाला मैं नहीं करूंगा. चल आ जाते अंदर. मैं तो ये कह रहा हूँ, ये रॉड वाला भी है. अपने अंदर का कमांडो दिखा दे. नहीं सो गया. पैरा कमांडो. पैरा कमांडो तो शिव है. आजा शिव.
मेरा तो सिर्फ स्लीपिंग बैग वाला काम है। सोने का काउंट टांगे चल। बहुत बढ़िया सही है सही है। यस आराम से कोई जल्दी नहीं, बहुत फुटेज है। आईएएस तो ये है। मेरे तो हाथ ही नहीं पहुंचेंगे ऊपर। तू मत करना फिर। एंगल चेंज करते हैं। वहाँ से बहुत ही उम्दा। इधर भी क्या बात है लड़के, किधर तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। तो बैच बहुत बढ़िया मिल लूं। अब झुला दो। बाबा मेरे को झुला हुआ था। पेट में जाएगा क्या? हाँ जाएगा नहीं जाएगा। पेट तक पहुंचाना है इसको। क्या बात कर रहा है? अरे सावधानी। हो गया लगा। अबे मत कर, मेरे गिरूंगा। रोक दो। हाँ ठीक है। चश्मे बाहर आ गए उसके। रुको। टांग पकड़ बाप रे। वो खुद से थोड़ा ना झूलेगी। मेरे को झूलना नहीं है। झुलाओ ना। देव आजा देव। मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। थोड़ा सा तो झुलाओ। ना से पकड़ रखा था, ये पकड़ नहीं पाएगी। अरे थोड़ा सा, नहीं झूलाना है। थोड़ा सा। तू साइड। अरे थोड़ा सा करो ना यार, क्या मजा। थोड़ा सा। अरे नहीं करा चला। मत कर। थोड़ा सा। अरे हल्का सा कर दे। बस इतना यहाँ देखो अभी। होल्ड कर, थोड़ा होल्ड कर वहाँ पे। हाँ ऐसे ही होल्ड कर। So it's a nice place for who likes adventure activities like climbing and commando. उसको क्या बोलते हैं? कमांडो ब्रिज। Commando bridge and all these sorts of things with an exception view of Panchachuli. 50 rupees per person is the entrance fee, but it's worth it. It's nice. आओ आइए। Oh my God! Thank you. Happy birthday. अरे बस करो। हो गया भाई। Thank you so much. अरे कैंडल लगाना भूल गया। अरे ठीक है। अब ना Thank you. Thank you so much. मैं सो गई थी। हाँ वो पता चल गया था। सो गई थी, उठ नहीं रही थी, बाहर नहीं आती, बोले ठंड लग रही है। फिर गर्म पानी किया, बोला मैडम आइए बाहर। आप कैंसर हो रहा है।